So two types of hydrogen bonds are present. One is called intermolecular hydrogen bond, another is called intramolecular hydrogen. इससे पहले मैं ये दो टाइप समझाऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम है हाइड्रोजन बॉन्ड से? एनीवन? If no, then these terms are very important. Look, inter and intra, ये वर्ड कहाँ सुने हो तुम लोग? Everyone heard these terms. Yes, inter word, like international match, isn't it? It's a between. International, yes, international match. India and Pakistan, okay, India, Bangladesh, America, and this and that. Different nations when interact, then this is called international. Similarly, intermolecular force means what? Intermolecular force means between two molecules. Okay? जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा between two molecule, between two separate molecules, then that bond is called intermolecular hydrogen. It doesn't mean that two molecules should be different in nature. No, they are separate in nature. Like HF, HF, HF. So this is one molecule. Okay, ये एक molecule है और ये भी एक molecule है. So one molecule, another molecule. So bond between them is your intermolecular hydrogen. Okay. Similarly, suppose this is water and this is alcohol, ethanol, C2H5. Again water, or again ethanol and then water, like this, whatever it may be, the order. So again here, hydrogen is electropositive, oxygen is electronegative. So there also a bonding exists here. This again is intermolecular, intramolecular. This type of bonds are confused. Intermolecular. Yes, intermolecular, because they form between two separate molecules. One molecule, another molecule. Similarly, here one molecule, this is another molecule. It may be same HF or may be different, but those molecule के बीच में हुआ इसलिए intermolecular hydrogen. But if hydrogen bond is formed within the molecule, उसी molecule के अंदर बन गया है, then that is called your intramolecular. Like इंट्रानेशनल मैच. इंटरनेशनल मैच मतलब रणजी ट्रॉफी होता है, क्रिकेट अगर देखते होगे तुम लोग, और आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग. सो आईपीएल इज एग्जांपल ऑफ योर इंटरनेशनल मैच. ओके, बिकॉज एक ही नेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आपस में फाइट कर रहे हैं, मुंबई, देन कोलकाता, चेन्नई, लाइक दिस देम. सो व्हेन it is a bond between, or a game between the nation. Similarly, this is a bond inside the molecule. For example, orthonitrophenol. Orthonitrophenol you already, अगर IUPAC nomenclature सीखे होगे तो इसका स्ट्रक्चर बना लोगे. This is benzene ring, this is OH molecule, and this is NO2 molecule. Now here, this hydrogen is electropositive, this oxygen is electronegative. Similarly here, oxygen is electronegative. So an attraction force exists inside this molecule. And this is your intramolecular hydrogen. So समझा पाया intermolecular and intramolecular में अंतर? Yes? Any question? No, sir. No, sir. Okay. Then this is a problem from your NCERT. Question number 39. Define hydrogen bond. You can do it. Is it weaker or stronger than the van der Waals force? What do you think? It is weaker or stronger? Sir, which one? Hydrogen bond. Hydrogen bond. Sir, it is stronger. Yes, hydrogen bond is stronger than van der Waals.
So which is, so you have to write this question. बॉन्ड के लिए मैंने बता दिया था, याद रखना आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स। रिमेंबर दिस। एक और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, इसको तुम लोग थोड़ा लिख लो, अभी लिखो कॉपी में। क्वेश्चन में लिखो एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल explain why orthonitrophenol सर एसिडिक इन नेचर is more volatile than paranitrophenol. सर वोलेटाइल मतलब ज्यादा वोलाटाइल होता है, इजीली चला आता है एटमॉस्फेयर में, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस क्वेश्चन को घुमा के भी बोल सकता है, ठीक है, इसको घुमा के बोल सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, लिख लो इसको भी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल is less than paranitrophenol. Why? देखो ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 12 में भी पूछता है, जब तुम लोग फेनॉल वगैरह चैप्टर पढ़ोगे, क्लास 11 में पूछेगा फ्रॉम दिस चैप्टर। सो एवरी चैप्टर्स क्लास 11 और 12 they are interrelated. Now the concept of boiling point or volatile of a substance is depend on what? It depend on two things, remember. One is called your molecular weight, and second thing is your kind of bonding. कोई भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, या फिर वो वोलाटाइल होगा या कम वोलाटाइल होगा, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा होता है किस तरह का बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही होगा, बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज लुक लाइक दिस। अभी हम लोगों ने देखा था, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लेना, क्योंकि ये स्लाइड नहीं है, मैंने एक स्क्रीन ऐड किया है। सो इसको स्क्रीनशॉट एक ले लो जरा तुम लोग, टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज कॉल्ड पैरानाइट्रोफेनॉल। नाउ देखो, दे कंटेन सेम OH, सेम NO2, बस just their positions are different. By changing their position, why their boiling point change? वो तो सर आपने नहीं पढ़ा अभी तक। पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी, सर वो पढ़ा दिया। चैप्टर में है सर, वो हाइड्रोकार्बन है ना 13 उसमें सब दिया हुआ है। No, it is not depend on the chapters, it depend on the concept. The concept I just taught you, it depend on the intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. The answer is based on this. Okay, so मैंने क्या कहा, दो चीज पे डिपेंड करता है। यस सर प्री नाइट्रोफेनॉल में सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा ना। यस, सो लुक, इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। डिपेंड ऑन टू थिंग्स, आई फर्स्ट टोल्ड यू, डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। सो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ये तो फैक्टर यहाँ नहीं आएगा। इसका आंसर किस बेसिस पे होगा? काइंड ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट। ओके, सो लेट मी ऐड अ स्क्रीन हियर, वेट अ मिनट। आंसर जो है मैं वो बता रहा हूँ तुम लोग को, ध्यान से देखो। सो दिस इज योर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, और यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड हो रहा है? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, isn't it? This is your hydrogen bond in case of orthonitrophenol.
Highly for you, it may be a new structures of organic and all this. Try to observe all of them. If you face any problem, feel free to ask me or interrupt me in the live class. Okay? Okay, sir. Yeah. And this is your paranitrophenol. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, आसानी होगी. किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं 2 मॉलिक्यूल को खरा नहीं करके मैं उनको सुला दिया. Okay, like this. Now this hydrogen is delta positive, this is delta negative. Similarly, this oxygen is delta negative, delta positive, delta negative. Now the bond is formed here. Okay, similarly अगर दूसरा molecule इधर लो तो यहाँ कहीं form हो. So this hydrogen bond is your intramolecular, isn't it? Yes, sir. And in case of your paranitrophenol, they form intermolecular. Yes, sir. Intermolecular hydrogen bond. Now, different molecules are attached to each other by means of a bond. So they form a chain, isn't it? ऐसा नहीं लग रहा एक चेन बना रहा है, ये इसके साथ लिंक्ड है, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, they are linked to Yes, each other. sir. So they form a chain of molecule. But यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अकेले है, अपने अंदर बॉन्ड बनाया तो क्या बनाया? Isn't it? Yes, sir. So अब मुझे बताओ कि कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कौन इजीली आ जाएगा एटमॉस्फेयर में? सर बॉइलिंग पॉइंट सर पैरानाइट्रोफेनॉल का ज्यादा होगा. Yes. Can anyone write the answer? इसका आंसर राइट करो सब अपने कॉपी में और अभी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो मेरे नंबर. यस, मेरे नंबर पे सेंड करो इसका आंसर अभी लिख के. स्ट्रक्चर को नोट डाउन करो और इसका स्टेटमेंट मुझे देखना है कौन क्या लिख रहा है. राइट डाउन द स्टेटमेंट. यू हैव just 2 minutes. Go ahead, fast. Hello. Yes, sir. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you show the question again? Question is simple. Boiling point of paranitrophenol is greater than orthonitrophenol. Explain why. ये समझ में आया कि नहीं तुम लोगों? मैंने जो समझाया कि क्यों ज्यादा है क्यों कम है, किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है? Yes, sir. समझ में. ओके, दीपक को डाउट नहीं. एनीवन एल्स? आहिली, एनी डाउट? सर और एक बार बोल सकते हैं? यस, तो बोलो, जो भी प्रॉब्लम होगा बोलो. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके. पैरानाइट्रोफेनॉल फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सॉरी, गलत बोला मैंने. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. पैरानाइट्रोफेनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. Means two more separate molecules are attached to each other by means of hydrogen bond. So to vaporize them
or to break that bond and make this molecule free to come to the atmosphere. We need to break these bonds, isn't it? So high amount of energy or more temperature is required to free the para-nitrophenol compared to orthonitrophenol. Is it clear now, everyone? मैंने आंसर तो बता ही दिया, यही तो लिखना है तुम लोगों को. Is it clear? Yeah. Yes, You sir. have to write the statement like this. Okay, one more question and now this is your homework. इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा क्लास के बाद मुझे बोलोगे. H2O and H2S. H2O and H2S. दोनों में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? सर H2S का. Yes, molecular weight of H2S is greater than molecular weight of H2O. But H2S is a gas and H2O is a liquid. Isn't it surprising? हम लोग को पता है जिसका molecular weight ज्यादा होता है वो ज्यादा heavy है. And if it is heavy, then it settle down and convert into liquid. But in this case, H2S, hydrogen disulfide, and water, H2S and H2O, the molecular weight of H2S is greater than that of water, but still H2S gas है, H2O liquid है. ऐसा क्यों होता है? Anyone? सर सल्फर का एक बार एटॉमिक नंबर बताएंगे? कहाँ पे होता है पीरियड टेबल में? पूरा पीरियड टेबल मैंने सिखा दिया, अभी पूछ रहे हो? ऑक्सीजन के नीचे होता है ना सल्फर. ऑक्सीजन का Yes, एटॉमिक sir. मास कितना? एटॉमिक नंबर कितना? 8. मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 16 है ना? तो सल्फर का कितना होगा? 32 होगा. Yes. इसका आंसर क्या है? एनीवन? आहिली, अनंत, एनी आइडिया? Come on. Water can form hydrogen bond, but H2S cannot. बस यही तो आंसर है. वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, the molecules are attached to each other by means of hydrogen bond, whereas in H2S they are not form hydrogen bond. A weak Yes, sir. van der Waals force is present. एक वीक van der Waals फोर्स प्रेजेंट होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो दैट इज व्हाई H2O is a liquid but H2S is a gas. इसका आंसर लिख के बताओगे मुझे. सेकेंड क्वेश्चन. yes, why अच्छा, एक सिंपल सा मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कौन इसका आंसर बताएगा मैं देखता हूँ. सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और इसको पूरा फुल कर दो. ओके, पूरा एकदम 100% फुल ऊपर तक, एंड देन इसको फ्रीजर में डाल दो at 0 degree Celsius to convert this water into ice. Then what happen? सर आइस का मास बढ़ जाता है सर, वायरस तो इसीलिए ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना. Is it so? मास बढ़ जाएगा? नो सर, मास सेम रहता है सर, उसको मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है सर. Yes, that's true. मास कभी नहीं चेंज होता. किसी ने ऑब्जर्व किया ये? अनंत? यस सर, गिलास में रख दें सर, नीचे से गिलास गोल हो जाता है अपने आप से. So why volume of ice is greater than water? Aili, did you ever experience this type of practical things? That volume of ice sir. is greater than that of water. And this is the reason the cube of ice is float on water.
अगर आइस का एक क्यूब को तुम वाटर में डालो तो दैट क्यूब इज नॉट सेटल डाउन, राइट? इट फ्लोट ऑन दैट वाटर surface Yes, sir. because its volume is greater than that of water. And if you closely pack a substance, water, then if you put it under your what is called fridge, then the volume of that water increases. This is practical thing. This answer is also explained from hydrogen bond. And third, why density of water is Is maximum maximum. at 4 degrees Celsius. Yes, maximum at 4 degrees Celsius. वाटर का डेंसिटी जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है. इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है दैट इन द पोलर रीजन, सपोज इन द पोलर रीजन, साउथ पोल और या नॉर्थ पोल, वहां पे जो लेक होते हैं, लेक, वो पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसमें जो मछली वगैरह होंगी वो सब तो मर जाती होंगी. यस और नो? ऐसा होता है क्या? No, sir. Why? Suppose this portion of the lake is converted into ice, but bottom face of this your lake तो उसमें water है. still is water, still liquid water, because here the temperature is 4 degrees Celsius. जहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं, वहां पे इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है एंड ये स्टिल लिक्विड में रहता है. और जितने मतलब वाटर बॉडीज के एनिमल्स है वो यहाँ पे लीव करते हैं, ऊपर नहीं रह पाते. ओके, सो दिस काइंड ऑफ Yes, क्वेश्चन. sir. आइस टूट जाता है कभी-कभी उसके ऊपर चलने से. Yes, so this kind of question may ask in your examination. Okay, so I want this answer before next class. This is your homework. Any question? Yes, sir. Okay, so next topic is your gas law. The gas law start with the very famous law which is called Boyle's law. Okay, Boyle's law क्या है? At constant temperature, this is not, at constant temperature, the pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with the volume. Means what? If you keep the temperature as constant of a fixed amount of a gas, then if you increase the pressure, then the volume decreases. Or in the reverse case, if you decrease the pressure, then the volume will increase. Can anyone explain me the practical example of Boyle's law? कहीं देखे वो लोग? Practical example. Yes. Sir, वो इंजेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट. Injection. Yes, explain. समझ में नहीं आया मुझे. सर वो पिस्टन को नीचे की तरफ करते तो उसका वो जो वॉल्यूम वो चेंज होता है. Yes. प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होते जाता है. Yes, yes. So this is not injection. This is piston. Okay. So suppose करो this is a piston, which is a frictionless piston. Piston actually कहाँ हम लोग को practically देखने मिलता है? In your सर engine. वही इंजेक्शन के अंदर में, इसलिए मैं उसका नाम इंजेक्शन रखता हूँ. Yes, इंजेक्शन में देखने मिलता है. जैसे इंजेक्शन में एक पिस्टन लगा रहता है, which is basically called valve, not piston. Pistons are basically present in your engine. कार का इंजन या फिर बाइक के इंजन में जो लगा रहता है, that is your piston. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसको बार बार पढ़ेंगे ना, इसीलिए मैं पहले से एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे. सपोज दिस इज अ पिस्टन कंटेनर एंड यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. इसके ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से. ओके, लाइक दिस. सपोज वी अप्लाई प्रेशर P1. एट दैट मोमेंट इस गैस के अंदर का जो यहाँ पे गैस है, यहाँ पे इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो है V1. ओके, इज इट क्लियर? एंड द टेम्परेचर Yes, इज sir. T. Temperature of this system is T. Now
नाउ सपोज व्हाट हैपन, नाउ वी इंक्रीज द प्रेशर, इसके ऊपर और हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, एंड प्रेशर अप्लाई करते 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 पिस्टन जो है थोड़ा नीचे आ जाए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, सो ये पिस्टन अगर नीचे आ जाएगा तो गैस का वॉल्यूम जो है अब ये चेंज हो गया। अब इसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, कितना, P2। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? यस, तो डिक्रीज हुआ। yes, so if we सर डिक्रीज increase हुआ। the pressure then volume is decreasing। और इसके सेम टाइम में टेम्परेचर भी चेंज होता है, लेकिन हम लोग क्या किए, ऐसा स्टील का कंटेनर रखो so that the produced heat is removed to the atmosphere and the temperature is kept constant। टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा। so what happen, if we increase the pressure the volume decrease, and in the reverse case if we decrease the pressure the piston will shift upward। okay, the piston will shift somewhere here and the gas volume will increases, yes or no? So in this case we understand sir. that pressure is inversely related to that of volume provided the temperature is kept constant। is it clear? Ahili, यस is सर। it clear to you? सर हम इसका यूज कैसे करेंगे Yes, sir. मतलब चैप्टर में? चैप्टर में कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। स्टेटमेंट पूछ सकता है, मैं भी एक्सप्लेन बॉयज लॉ, बट ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछेगा। मैं इसके आगे बताता हूँ। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, राइट? यस So सर। we can say a constant is come divided by volume. When a proportional sign is converted into equal to, then a constant is come at right hand side. So we can also write cross multiply kar do, PV is equal to always constant. यस सर। This is another mathematical expression of Boyle's law. If PV is always constant, so can we write here that P1 V1, suppose pressure is P1, at that moment volume is V1. If we change pressure as P2, then volume is changed to V2. So Yes, if sir. P1 V1 is constant, as well as P2 V2 is also constant, so can we write P1 V1 is equal to P2 V2? Yes, sir. This expression is mathematical expression for Boyle's law which is required for numericals. Problems करेंगे इसके ऊपर हम लोग। P1 V1 is equal to P2 V2. This come from Boyle's law. Remember. Yes. Any question? अनंत समझ में आया ये Boyle's law? सर बोलो। सर प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ेगा ना, गैस मॉलिक्यूल को तुम बहुत क्लोज लेके आ रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करने लगेंगे। कभी तुमने देखा हो गैस में जब टायर, सॉरी मैं ऑडिबल? हेलो, सर am I बीच audible? में Yes, yes. कट गया। Now am I audible? यस सर। Now मैं बोल रहा हूँ साइकिल के टायर में, टायर ऑफ साइकिल, उसमें जब हवा भरा जाता है, कभी टच किए उसको, क्या होता है? यस सर, वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, क्यों? तुम सोचा? क्योंकि उसमें जब तो तुम, उसके अंदर का गैस कंप्रेस होने लगता है इसीलिए। यस, तो गैस कंप्रेस होने का मतलब क्या होता है, ये गैस मॉलिक्यूल इधर जाके इससे कोलाइड होगा, सो कोलिजन होने लगता है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड दे प्रोड्यूस हीट। ओके, सो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, ओके, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एट द सेम टाइम एक मैं चार्ल्स लॉ इसके बाद पढ़ाऊंगा, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट होगा, मैं अभी पूछ ले रहा हूँ। सपोज यू हैव बलून, ओके, ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बलून और टायर तो ब्लास्ट करने मैं बोलूंगा नहीं, तो बलून ही ले लो।
और बलून को जब ब्लास्ट करोगे, एट दैट मोमेंट टच दैट बलून and experience its temperature is increased or decreased. Can anyone experience this? Sir, temperature will be increased. No. एक बलून लेना, उसको अच्छे तरीके से बड़ा सा बनाना एंड इसको ब्लास्ट करना, ब्लास्ट करने के बाद इमीडिएटली उस बलून को टच करके देखना, वो ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। या फिर कभी अगर तुम लोग का साइकिल का टायर ब्लास्ट हो जाए, एट दैट मोमेंट उस ट्यूब को टच करके देखना, बहुत ठंडा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। So blast होने के बाद डिक्रीज होता है. Yes, when the volume is suddenly decreases. This is another very interesting experiment. And why this happened, we come to later on in the Charles law. Okay, so this is Boyle's law. Any question? If Sir, no, एक चीज पूछना है सर. yes, बोलो. सर अगर उसमें टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तभी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. इसीलिए तो मैंने कहा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखेंगे? बहुत स्लोली करेंगे। वी कैन डू द सेम प्रोसेस बट वेरी स्लोली। इस पिस्टन को स्लोली स्लोली नीचे ले जाओ, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एक्स्ट्रा टेम्परेचर। सो इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग उसको लेटर ऑन पढ़ेंगे, नॉट हियर। ठीक है, टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखना है, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोपोरिक प्रोसेस, ये तुम लोग का थर्मोडायनेमिक्स में है ऑलरेडी, क्लास 11 पढ़ेंगे वहां। सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? नहीं, केमिस्ट्री में ही है, फिजिक्स में भी है क्लास 12 में। ओके, सो ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, ग्राफ पूछता है एग्जाम में। बॉयल्स लॉ से प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यस, ग्राफ बनाते हो तुम लोग? Minutes. I have to show you Sir, it how. will be straight line. I must show you how to draw a graph first. First of all, understand the concept. We have pressure, we have volume, okay, and then we have product of these two. So suppose when pressure is 1 atmosphere, volume is 10 liter. PV is equal to how much? 10 liter atmosphere. Yes or no? If we increase the pressure to 2 atmosphere, then the volume will decrease or increase? Decrease. Ahili, decrease or increase? Sir, decrease. Sir, Yes. So decreases. suppose it is 5 liter. So what is the value of PV again? It is 10 liter atmosphere. If we further increase the pressure to 3 atmosphere, or suppose easy करता हूँ Sir, मैं इसको, 2.5 liters. 2.5 कर सकते हैं, no problem. Suppose 5 atmosphere, then volume is further decrease. Now it is suppose 2 liter. 2. So it is 10 liter atmosphere. PV हमेशा constant होता है. It is suggested by our Boyle's law. Look, PV is always constant. That is why मैं ऐसे choose कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं। ठीक है ना? So जितना तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तुम्हारा वॉल्यूम घट रहा है। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे यहाँ पर, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज। सपोज दिस इज प्रेशर एक्सिस Yes, sir. and this is your volume axis. So when pressure is 1, volume is 10. Point is here. When pressure is 2, volume is 5. Point is here. When pressure is 5, volume is 2, the graph is here. So this graph will look like this. This is called decreasing graph. Always remember, Sir, reciprocal it का will be graph, curve. inversely proportional का ग्राफ जो होता है always rectangular hyperbola होता है, means decreasing. So the graph is look like this. Okay, is it clear or not?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second is pressure versus not volume. Pressure versus 1 by volume. Now this graph will look like how much? ये कैसे हम लोग करेंगे? Pressure is inversely proportional to volume. So inverse का ग्राफ ऐसा होता है. Now यहाँ पे क्या होता है? Pressure is inversely proportional to volume, and in this question 1 by V is given. So suppose 1 by V is equal to Z, X suppose. So P is proportional to X, where X is equal to 1 by V. Okay. So directly proportional का ग्राफ कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्रीजिंग. इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीजिंग. नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिंग आर इंक्रीजिंग. समझ में आया? नहीं आया? सर एक वन बार बाई समझाइए, मुझे नहीं समझ में आया. 1 बाई वी का वैल्यू ले लो ना, कुछ नहीं है यहाँ. वी पता है तुमको, तो 1 बाई वी कितना होगा बताओ? ये होगा 1 बाई 10, ये होगा 1 बाई 5, ये होगा 1 बाई 2. 1 by 10 is how much? 0.1. 1 by 5 is how much? 0.2. 0. And 1 by 2 is 0.5. 0.5. So plot the graph. This is 1 by V. This is P. Again 1, 2, 3, 4, 5. And 1 by V is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. So when pressure is 1 by V is 0.1. So graph is here, then here, then here, and so on. So it is increasing. Yes sir. समझ में आया? Ahili? Yes, sir. The trick is very simple. Remember, trick exam में याद कैसे रखोगे? Inverse, यहाँ pressure ऊपर है, यहाँ volume नीचे है. So inverse mean decreasing. And P and 1 by V total, इस total को पकड़ लिया ना मैंने, not only V. So P is directly proportional to 1 by V. और 1 by V को x let कर लो ना. So 1 by V suppose x. So P is directly proportional to x. So when x increase, P increase. So direct relation means look like this. So these two are your homework. ये slide अभी मैं भेज दूंगा ग्रुप में. PV versus V curve and PV versus P curve and all curve. Previous जो दो curve था, all curve at varying temperature. मीन्स टेम्परेचर अगर वैरी करेंगे तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ये भी बताना. ठीक है? एनी क्वेश्चन? सर लेकिन हमने तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने के बारे में पढ़ा ही नहीं. टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? इट इज वेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, इसीलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ. थोड़ा बुक भी पढ़ना जरूरी है ना, बुक को पढ़ना होगा, वरना बुक तो पढ़ोगे नहीं तुम लोग, होमवर्क नहीं मिलेगा तो. टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, बढ़ेगा या कमेगा? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं. एनी क्वेश्चन? सर इंक्रीज करेगा. ओके, आई वांट टू नो योर आंसर स्क्रिप्ट में. नेक्स्ट क्लास हम लोग यूनिट कन्वर्शन सीखेंगे एंड देन न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर. एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? अदरवाइज वी एंड द क्लास. नो सर. ओके देन, गुड नाइट. No, sir. गुड नाइट. Good night, sir. Good night, sir.